శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం. అందరూ మీ గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించండి. మీ పేరుని, మీ ధర్మపత్ని పేరుని, మీ పిల్లల పేర్లని, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లని అందరూ మనసులో స్మరించి స్వామివారిని మనసారా ప్రార్థించండి. అందరూ చెప్పండి. మమ సహ కుటుంబస్య సబాంధవస్య సపరివారస్య క్షేమస్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే రాజముఖే సర్వ అనుకూల సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక కళ్యాణ మహోత్సవం శ్రీ వైఖానస భగవత్ శాస్త్ర మార్గేణ ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే సర్వం శ్రీ శ్రీనివాస అర్పణమస్తు. ఓం నమో వెంకటేశాయ. వినా వెంకటేశం ననాదో ననాదో సదా వెంకటేశం స్మరామి స్మరామి. హరే వెంకటేశం ప్రసీద ప్రసీద பிரியம் வெங்கடேச பிரயச பிரயச. பக்தர்களே, இனிய பொங்கல் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள். இன்று மகர சங்கராந்தி பொங்கல் பண்டிகை. பக்தர்களுக்கு வாழ்த்துக்களை கூறி வரவேற்பது திருமதி ஏ. அருணா. பகவானின் அனுகிரகத்தோடு எல்லோரும் நலமாக இருக்க வேண்டி நாம் சேவித்து கொள்ளலாம் அந்த அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயகன் திருவேங்கடமுடையானை. அவனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இதோ இப்பொழுது நாம் சங்கல்ப மந்திரங்களை கேட்டோம். அதை ఇదం బ్రహ్మ పునీమహే బ్రహ్మా పునాతు. ఓం శ్రీ వెంకటేశమతి సుందర మోహనాంగం శ్రీభూమికాం తమరవిందతలాయతాక్షం ప్రాణప్రియా పరమ పంకజ కంభుకంఠం బ్రహ్మేశ వంద్యవరదం అమృతం భజామి. భృగ్వద్రిగస్య మమనీజ మధ్యే స్థిత్వాసనే కుసుమగే సముధీరయంతం శ్రీశాస్త్రసారమఖిలం విఘ్నో మునీంద్రం భూయో నమామి భువనైకగురుం ప్రసన్నం. శ్రీమదే వికనసే నమః. భృగుమరీచత్రిగస్య వేభ్యో నమః. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే. యస్యత్వరదవక్రాద్యాః పారిషత్యాః పరశతం విఘ్నం నిఘ్నంతి సతతం విశ్వక్సేనం తమాశ్రయే. ఓం శ్రౌతస్మార్తాదికం కర్మనిఖిలం येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विखनसे नमः. ओम भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतकर्मणा भगवदानुगृहीतो भगवदानुध्यातो भगवन् ध्यात्वा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवान् न मन्यतां प्राणराजम्याम्. ओम अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य परव्यूह विभव अन्तर्यामि अर्चावतार स्वरूपस्य श्री भूनीलासमेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याण महोत्सवाख्यञ्च कर्मणि स्पन्दल परिधिपरिस्तरण सर्वोपकरण सुत्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धि पुण्याः वाचनाख्यं क्रमकरिच्छन्नादो निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनाख्यञ्च कर्मणि तरङ्गकरकाराधनं करिष्ये.
ఓం ధారాసురప్తసుడమానసేషు ధరత్తరిత్వపరిపూరితేషు అపోభిగృహ్ణన్ ప్రతిమాదకిష్యే గృణోమి దత్తాగం సుధరగం సుధర్మ జితమా పశ్చిమా శుభతమా శాంతా శాంతరమా శుభా శుభతమా పూతా పుతరమా పుణ్యా పుణ్యతమా మేధ్యా మేధ్యతమా అమృత అమృతరసాః పూతా బ్రహ్మ పవిత్రేణ పూతా సూర్యస్య రశ్మిభిః ఏతే శతం వరుణే ధాత్రం యజ్ఞాపాజాపితరా పుత్ర తేభ్యో న ఇంద్రస్య విదోత విష్ణుర్విష్మే దేవామంజన్ మరుతస్పస్య అస్మిన్ కుంభే ఓం వరుణమావాహయామి ప్రతేత సమావాహయామి సప్తామ్రధనమావాహయామి యాతస్పతిమావాహయామి వరుణాయ నమః ఆసనం సమర్పయామి వరుణాయ నమః పాద్యం సమర్పయామి వరుణాయ నమః అర్ఘ్యం సమర్పయామి వరుణాయ నమః ఆచమనీయం సమర్పయామి వరుణాయ నమః పుష్పాన్ని సమర్పయామి వరుణాయ నమః ప్రతేతసే నమః రక్తాంబరధరాయ నమః యాదస్పదయే నమః వరుణాయ నమః బలోపహారం నివేదయామి గుడోపహారం నివేదయామి తాంబూలం సమర్పయామి సర్వోపచారాన్ సమర్పయామి సుధీశ్వరాయ విద్మహే పాశహస్తాయ ధీమహి తన్నో వరుణ ప్రచోదయాద్ వరుణాయ నమః సర్వోపచారాన్ సమర్పయామి ఆదో నిర్విఘ్నేన ప్రథమా ఆవాప్యర్థం విశ్వక్సేనారాధనం కరిష్యే విశ్వక్సేనం చతుర్బాహం సంకటకరసమన్వితం జగాపదం శృంగకేతుం సుపుష్పరథవాహనం పూర్వాషాఢోద్భవం దేవం దక్షిణ ముఖమర్చయేద ఆగ్నేయుయస్మాత్ జామహే త్వా విశ్వే సదాత్మమహిదో న శంభో వైరాజందే దోదన్నిరత్తాం ప్రేష్యామ దేశో విపధానామనాదర్యామే సస్తాంతరితాన్ దధాత పద్మాకారమండలే ఓం భూః విశ్వక్సేనమావాహయామి ఓం భవః శాంతమావాహయామి ఓం స్వః హరమావాహయామి ఓం భూర్భువః స్వః అమితమావాహయామి నిత్యానుభాజనమావాహయామి తద్దక్షిణే సూత్రపతిమావాహయామి వామే జగామావాహయామి సూత్రపతి దీర్ఘాసమేత శ్రీ విశ్వక్సేనస్య గీతామాసనం విశ్వక్సేనాయ నమః పాద్యం సమర్పయామి అర్ఘ్యం సమర్పయామి ఆచమనీయం సమర్పయామి విశ్వక్సేనాయ నమః గుడోపహారం నివేదయామి తాంబూలం సమర్పయామి సర్వోపచారాన్ సమర్పయామి విశ్వక్సేన స్మృతో రాజా భగవాన్ సర్వకర్మణః తస్మాదనాన్యమపాసీత కర్మణాం విఘ్నశాంతయే ఆరంభే కర్మణాం పుష్టిం విజ్ఞానాం పరసమాప్త్య చ కుర్యాత్ సపరివారస్య విశ్వక్సేనస్య పూజనం భవద్భరణజ్ఞాతః సుపుణ్యం పుణ్యాహం వాచయిష్యే వాచ్యతాం సుపుణ్యాహం కరోమి కురుష్వ స్వస్తి సుప్రోక్షితం అస్తు ప్రజాపతి ప్రియదాం ప్రజాపతిః శాం యంతు ఘోరాణి శాం యంతు మాపాని శాం యంతు గీతయః శుభాని వర్ధంతాం శుభాని శాం యంతు ఘోరాణి శాం యంతు మాపాని శాం యంతు గీతయః శుభాని వర్ధంతాం శుభాని శాం యంతు ఘోరాణి శాం యంతు మాపాని శాం యంతు గీతయః శుభాని వర్ధంతాం శుభాని అతో దేవా అవంతనో యతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తధామభిః ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధా నిదధే పదం సమూఢమస్య భాగం సురే త్రీణి పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోమాదాభ్యః తతో ధర్మాణి ధారయన్నే విష్ణోః కర్మాణి పశ్యతి యతో వృధాని పస్పశే ఇంద్రస్య ఇత్యస్సఖా తద్విష్ణోః పరమం పదకం సదా పశ్యంతి సూర్యః దివీవ చక్షురాదనం తద్విప్రాదో విపణ్యవోజాగ్రవాగం సస్సమింధతే విష్ణోర్యత్పరమం పదం ద్రవిణోదాద్రవిణసస్తురస్య ద్రవిణోదాస్సనరస్య ప్రియం సతే ద్రవిణోదా వీరపదే మిషన్నో ద్రవిణోధారాసతే దీర్ఘమాయుః యత్పుణ్యం నక్షత్రం దత్పక్కుర్వీదోపవ్యుషం యదా వై సూర్యముదేతి అథ నక్షత్రం నియతి యావత్ తత్ర సూర్యో గచ్ఛేత్ తావత్ కర్మేత యత్కారీ స్యాత్ పుణ్యాః ఏవ కురుతే ఓం భూః భూర్భువస్వరామస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య శ్రీ భూనిలాసమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాఖ్యం జగర్మణి స్థండిల పరిపరిస్తరణ సర్వోపకరణ సుత్యర్థం సర్వత్ర ప్రోక్షణార్థం పుణ్యాహం భవంతో భ్రమంత పుణ్యాహం క్రమణోస్తు స్వస్తి న ఇంద్రో వృద్ధశ్రమా స్వస్తి న పూషా విశ్వవేదాః స్వస్తి నస్తార్క్ష్యో అరిష్టనేమి స్వస్తి నో బృహస్పతిర్దధాతు పూర్వోక్తకర్మణి పూర్వోక్తయమానాయ పుణ్యాహం స్వస్తి భవంతో భ్రమంత कर्मणे स्वस्ति पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्त कर्मणे स्वस्ति पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्त कर्मणे स्वस्ति रुध्यास्म हव्येर्नमदो वदत्या मित्रं देवं मित्रधेयन्नो अस्तु अनुराधाने हविषा वर्धयन्तः शतञ्जीवे मित्रतस्य वीराः ओं भूः भूर्भुवस्वरां पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तयमानाय पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रमन्त कर्मर्ध्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्टामयो भवस्तानपूर्ते तथा तनामहेरणाय चक्षसे यो वशिवद मोरसस्तस्य भार्गदेहनः पश्यतिर्ममातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षयाय जन्मथा आपो जनयथा जनः ॐ पवमानस्सुवर्जनः पवित्रेण विजर्षणिः यः पोदासपुनातमा पुनन्तमादेव जनाः पुनन्तमनबोधिया पुनन्त विश्व आयवः जातवेदः पवित्रमदे पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदीत्यते अग्ने कृत्वा कर्तुकं वृणु यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने विततमन्तर ब्रह्मदेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनदी देव्यागात् यस्यै बक्वे स्तनवो वेदपृष्ठाः त्वया मदन्तः सदमार्
मर्त्येषु वयक्तस्यामपतयोरयीनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातु वातप्राणिनी शनोमयो भूः द्यावा पृथिवी प्रतिसापयोभिः अर्तावनी जिग्निये मा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वरिष्ठैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमा येन देवा अपुनता येनापो दिव्यं कृशः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पापमानी रुध्येति ऋषिभिः संभृतगं रसं सर्वगं सपूतमस्याति सुदितं मातरिश्वना पापमानीर्यो अध्येति ऋषिभिः संभृतगं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरगं सत्पर्मधूदगं पापमानी स्वस्तिगणीः सुदुःखा हि पयस्वतीः ऋषिभिः संभृतो रसः ब्राह्मणे स्वमृतकं हितं पापमानीर्तिशन्तुनः इमं लोकमथो अमं कामान् समर्थयन्तुनः देवीर्देवैः समाभृताः पापमानी सुस्तिगणीः सुदुःखा हि घृतश्चितः ऋषिभिः संभृतो रसः ब्राह्मणे स्वमृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पापमान्यः पुनन्तु मा प्राजापत्यं पवित्रं शितोत्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्व नीति सह पुनातु सोमस्वस्त्यावरण समीच्या यमो राजा प्रमुरणाभिपुनातमा जातवेदा मूर्तिगिन्त्या पुनात् संयोरावृणीमहे गादिं यज्ञाय गादिं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जि गातु भेषजं शिन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ओम प्रात्यान्तिषि देवार्चितो मार्जयन्तां दक्षिणायान्तिषि माताः पितरो मार्जयन्तां प्रणीत्यान्तिषि घा पशवो मार्जयन्तां उदीत्यान्तिस्यापमोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्तां मूर्धायान्तिषि यज्ञसंवत्सरो यज्ञपदर्मार्जयन्तामदोधराधैर्नायेभ्यो मार्जयन्ताम् अनोरणीयान् महदो महीयान् आत्मा गुहायां निहितोऽस्य दन्तोः तमकृतुम्बस्य दिवेदशोकोधातुप्रसादान् महिमानमीशं सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चितः समिधः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोकाये सुचरन्ति प्राणा गुहाशयान् निहिताः सप्त सप्ता अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वेऽस्मात् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतस्य विश्वावोषधयो रथाश्च येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः प्रणपाद्यर्घ्याचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः यथा सुखं यथा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च மகோத்சவத்திலே விஸ்வக்சேன் ஆராதனை சுத்தி புண்ணிய வாஜனத்தை சேவித்தோம். அடுத்ததாக அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை சேவிக்க இருக்கிறோம். அங்குரார்ப்பணம் என்பது மங்களகரமான வைதீக காரியங்களை தொடங்கும் பொழுது முதலில் அங்குரார்ப்பணம் நடத்துவது வழக்கம். தேவதைகளை ஆவாகனம் செய்து மண் பாலிகைகளில் நவதானியங்களை இட்டு தீர்த்தம், புஷ்பம், திருத்துழாய், அக்ஷதை இவைகளால் அர்ச்சிக்கும் நிகழ்ச்சியே அங்குரார்ப்பணம். எப்பொழுது தர்மத்திற்கு நாடம் ஏற்படுகிறதோ அப்பொழுது பகவான் அவதாரம் செய்கிறான். தசவதாரங்களிலே மனுஷி அவதாரம் ராமனாய் கிருஷ்ணனாய் அவதரித்ததாகும். அதற்கு முன்பு வராக மூர்த்தி அவதாரத்திலும் நம் போன்ற பக்தர்களுக்காக பகவான் நல்ல உபதேசத்தை செய்தான். இதை வராக சர்மஸ்லோகம் என்று சொல்லுவார்கள். நம் உடம்பில் தெம்பு இருக்கும் பொழுது, மனம் நல்ல நிலையில் இருக்கும் பொழுது, உடம்பில் உள்ள தாதுக்கள் சம நிலையில் உள்ள பொழுது எவன் கிருஷ்ணா, ராமா, கோவிந்தா என்று பகவான் திருநாமங்களை சொல்லுகிறானோ அவன் வயதான காலத்திலே கட்டையாகவும் கல்பேயும் படுக்கையில் படுத்து கொண்டிருக்கும் நிலை ஏற்பட்டாலும் கூட அந்த பக்தனை நற்கதிக்கு நான் அழைத்து செல்கிறேன் என்கிறார் வராக பெருமாள். அப்படி அந்த வராக பெருமாள் எழுந்தருளியுள்ள திவ்ய தேசமான இந்த திருமலை வராக க்ஷேத்திரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. அந்த வராக க்ஷேத்திரத்திலே பகவான் அந்த வராகரிடமே 100 அடி நிலத்தை கேட்டு அதை பெற்றுக்கொண்டு தான் இங்கே திருமலை அப்பனாக எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்து கொண்டிருக்கிறார். அந்த திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை முடித்துக்கொண்டு அடுத்ததாக ரக்ஷா பூஜை நிர்வகிக்க உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. இந்த ரக்ஷா பூஜை என்பது
நாகராஜனை ஆவாகனம் செய்து ஜெயாசூத்ரவதி என்னும் கயிற்றிற்கு முறையே பூஜை செய்வது. ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाख्यञ्जक्रमणि प्रतिसरबन्धन देवताराधनं करिष्ये. ओम यमर्पयन्त मनयो हविर्योजो हिरानर्पथा विराजन्ने तम्मयदोषायस्याननाग्न विपिनानि पतन्तु. ओम शेषमावाहयामि सहस्रशीर्षमावाहयामि अनन्तमावाहयामि नागराजमावाहयामि. रक्षासूत्र अधिष्ठान देवताभ्यो नमः. शेषाय नमः. आसनं समर्पयामि. शेषाय नमः. पाद्यं समर्पयामि. अर्घ्यं समर्पयामि. आचमनीयं समर्पयामि. पुष्पाणि समर्पयामि. गुडोपहारं निवेदयामि. ताम्बूलं समर्पयामि. सर्वोपचारान् समर्पयामि. ओम स्वस्ति नो मिमेतामश्विना भगत् स्वस्ति देव्यदेतर नर्मणाः स्वस्ति पूषा असूरो दधातन स्वस्ति द्यावा पृथिवी सूतेतुना स्वस्तये वायुमपप्रभामहे सोमं स्वस्ति भुवानस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्तये स्वस्तया आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवावन्त्रभवत् स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्मं धासः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति मध्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि स्वस्ति बन्धा मनोजरेम सूर्यादिन्द्रमधा विव पुनर्दधदाग्नादाजानदा सङ्गामे महि स्वस्त्यानन्तार्क्षमरिष्टनेमिं महद्भूतं वाक्यसं देवतानाम् असुरग्नमिन्द्राजगं समत्सु बृहद्यशो नामामिमारोहेम सम्भोमुचामाङ्गिरसङ्गयं च स्वस्त्यात्रेयं मनादाजतार्क्ष्यं प्रियातमानिशरणं प्रपद्ये स्वस्तिशं बाधे स्वभायन्नो अस्तु शुभागं शुभां. ஏடுகொண்டலவாட வெங்கடரமணா கோவிந்தா கோவிந்த. எம்பெருமானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே ரக்ஷைகளுக்கு பூஜை முடிந்து ரக்ஷா பந்தன கைங்கரியத்தை சேவிக்க இருக்கிறோம். இந்த ரக்ஷா பந்தனம் என்பது காப்பு கட்டுதல் என்று பெயர். திருமலை அப்பனுக்கும் மற்றும் நாச்சிமார்களுக்கும் அவர்களுடைய கரங்களிலே அணிவிக்கப்படும் கயிற்றிற்கு முறையே பூஜை நடந்தது. இன்று தை மாதம், அதாவது மகர சங்கராந்தி என்று கூறுவார்கள். சதுர்த்தி திதி மற்றும் திங்கள் கிழமை மகர சங்கராந்தி நன்னாளை ஒட்டி சதவிஷம் நட்சத்திரம் சதயம் என்று கூறுவார்கள். ஆக இப்படிப்பட்ட நன்னாளிலே முதலில் காலையிலே நாம் அந்த மகர சங்கராந்தி பொங்கலை வைத்துவிட்டு பெரியவர்களுக்கு பித்ரு கைங்கரியங்களை செய்து அதன் பிறகு நாம் இந்த கல்யாண உற்சவத்தை நேரடி ஒளிபரப்பில் செவித்து கொண்டிருக்கிறோம். நம்மை காக்கும் ரக்ஷகனான திருமலை அப்பனுக்கு ரக்ஷையை அணிவிக்கும் நிகழ்ச்சியிலே ரக்ஷாபந்தனம். ஸ்ரீதேவி பூதேவி இருவருக்கும் பிறகு ரக்ஷாபந்தனம் நடைபெறும். கஜேந்திரனை காத்த பெருமாளுக்கு ரக்ஷாபந்தனம். கஜேந்திரன் என்கின்ற யானை ஓர் மடிவிலே இருந்த தாமரை மலரை பறித்து பெருமாளின் திருவடிகளில் சமர்ப்பித்து வந்தது. ஒரு நாள் அந்த மடுவில் இறங்கி தாமரை மலரை பறித்த பொழுது ஓர் முதலை அதன் காலை கவ்வியது. யானைக்கும் முதலைக்கும் பெரிய போராட்டம். யானையோ முதலையை தரைக்கு இழுக்கிறது, முதலையோ யானையை தண்ணீருக்குள் இழுக்கிறது. இவ்வாறு 1000 ஆண்டுகள் போராட்டம் நடந்தது. முடிவில் கஜேந்திரன் என்கின்ற அந்த யானை அதிமூலமே என்று பகவானை கூப்பிட்டது. பகவான் ஸ்ரீ வைகுண்டநாதன் அரை குலைய தலை குலைய கருடன் மீது ஏறி மடுக்கரைக்கு வந்து கஜேந்திரனை ரட்சித்தான். அவ்வாறு ரட்சித்த எம்பெருமானுக்கு ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. நாமும் செவிக்கலாம் அந்த அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயகன் திருமலை அப்பனை. ஸ்ரீ வெங்கடேசா ஸ்ரீ சீனிவாசா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. அதன் பிறகு நாச்சிமார்களுக்கு ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை அர்ச்சக சுவாமி செய்து கொண்டிருக்கிறார். ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டிமார்கள் இருவரும் கூட அந்த எம்பெருமானுடைய வக்ஷஸ்தலத்திலே நிரந்தரமாக குடிகொண்டு அவர் எப்படி பக்தர்களை அருளி செய்கிறாரோ அதே போல் இங்கே பக்தர்களை அருளி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் தாயார்கள் இருவரும். ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கு முதலில் ரக்ஷையை அணிவிக்கிறார் அவருடைய இடது கரத்திலே. லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று.
அதைத் தொடர்ந்து பூமி பிராட்டிக்கும் ரக்ஷையை கையிலே அணிவிக்கிறார். இரு நாச்சிமார்களும் கூட எம்பெருமான் எந்த செயல்களை செய்தாலும் அதற்கு மறுப்பு கூறாமல் அவர் எப்படி பக்தர்களை அனுகிரகிக்கிறாரோ அதேபோல் இந்த நாச்சிமார்கள் கூட பக்தர்களை அனுகிரகம் செய்கிறார்கள். இதோ பூமி பிராட்டிக்கு ரக்ஷையை அணிவிக்க உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. திருவேங்கடவனுடைய இந்த இரு நாச்சிமார்களும் கூட எப்பொழுதும் அந்த எம்பெருமானை விட்டு என பிரியாது இருப்பவர்கள். அப்படிப்பட்ட அந்த நாச்சிமார்கள் ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கு ரக்ஷையை அணிவித்தார். அதைத் தொடர்ந்து இப்பொழுது பூமி பிராட்டிக்கு ரக்ஷையை கரத்திலே அணிவித்துக் கொண்டிருக்கிறார். தராரமண கோவிந்தா வசுந்தராரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று பூமி பிராட்டினுடைய இடது கரத்திலே அந்த ரக்ஷையை அணிவித்தார். அதைத் தொடர்ந்து திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே அந்த அர்ச்சக சுவாமியும் கூட தன்னுடைய கரத்திலே ஆத்ம ரக்ஷைக்கான அந்த ரக்ஷையை அணிந்து கொள்ள இருக்கிறார். இது ஏனென்றால் மனதில் அலை பாய விடாமல் ஒரு மனதோடு சுவாமி காரியங்களில் ஈடுபட வேண்டும் என்ற ஒரு நியதியினால் இந்த ஆத்ம ரக்ஷைக்கான கயிற்றினை கரத்திலே அணிந்து கொண்டு அதன் பிறகு அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமத்தை ஆரம்பிக்க உள்ளார். அக்னி ஆவாகனம் செய்கிறார்கள். நாமும் செவிக்கலாம் அந்த அக்னி பகவானை. ஓம் நமோ வெங்கடேசாய கோவிந்தா கோவிந்தா என்று திருவேங்கடமுடையானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தில் இப்பொழுது நாம் அடுத்ததாக அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமத்தை சேவிக்க உள்ளோம். யக்ஞரக்ஷக கோவிந்தா கோவிந்தா என்று திருவேங்கடமுடையானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமத்தை சேவிப்போம். அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயகன் भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाख्यं जगन्मणि औपासनाग्नौ अग्नि प्रतिष्ठापनं करिष्ये. ओम येतोन्विन्द्रं स्तवाम शुद्धं शुद्धेन साम्ना शुद्धैरुक्थैर्वा वृद्धांशं शुद्ध आशीर्वान् ममक्ते इन्द्र शुद्धो नागहि शुद्ध शुद्धाभिरोतभिः शुद्धोर्यं धारय शुद्धो ममद्य सौम्यः इन्द्र शुद्धो हिनोर्यं शुद्धोर्त्रा दाशुने शुद्धो वृत्राणि कृषे शुद्धो वाजं शिदाशुने मयि देवाद्रविणमाजिनन्तां मय्यासेरस्तुमयि देवहूतिः दैव्याहोतारामणिहन्तपूर्वे निष्ठास्यामधर्मा सुमीराः मह्यं जिदन्तममयानि हव्याकोतिः सत्यामनसो मे अस्तु येनो मानकान् कृतवच्चनाहं विश्वे देवासो अधिभोजदामे देवी ईश्वरर्वीर्णकृणोद विश्वे देवास यहवीर्यध्वं माहास्महि प्रजयामातरो धर्मारधाम प्रसदे सोमराजन् जातवेदो भुवनस्य रेतयः सिञ्चतपसो यत्यनिश्यते अग्निमश्वत्थादति हव्यमाहकं शमे गर्भाञ्जनयन्योमयो भूः घृतप्रदेको घृतयो निरग्निकृतैः समिद्धो घृतमस्यान्नम् घृतप्रशस्त्वाजरितो वहन्ति घृतं पिबन् सुखिताजिक्षिदेवान् आयुर्ताग्ने हविषो जठाडो घृतप्रदेको घृतयो निरेधे घृतं पीत्वा मदजारकव्यं विदेवपुत्रमहृक्षदादिमम् उपावरोहजातवेद पुनस्तं देवेभ्यो हव्यं वहन प्रजानन् आयुप्रजागमृगमस्माशते चतुस्रोदीदिहिनोदरोणे अजिरेण मन्यस्वा अनुमदेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविडप्रसुवा ब्रह्मजिज्ञानं भ्रमं परस्ताद्वशी मतस्रुजो वेन आवः समुद्रया पपवास्य विष्टासदश्चयोनि मसदश्च नमः ओं भू ब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणे नमः जितमासनं सोमो धेनुकं सोमो अरवन्तमासकं सोमो वीरङ्करमन्यन्द्रादो साधन्यं विदित्यं दभेकमतिस्रवणं योदरादो तस्मै ओं भूस्वममावाहयामि ओं भवर्जिज्ञाकमावाहयामि ओं सवरिन्दमावाहयामि ओं भूर्भुवस्वस्तिन्द्रमावाहयामि सोमस्य इदमासनं ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयित्वन्नागस्य पृष्ठेयमानो सुतप्तऋषीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेहि ओं प्रोक्ष्य सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयित्वन्नागस्य पृष्ठेयमानो सुतप्तऋषीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेहि ओं प्रोक्ष्य पवित्रे स्तो वैष्णव्ये स्तो स्तो वाजिभूते स्तो विष्णोर्मनधाभूते स्तो जिग्नस्य पावने स्तः प्रशरस्य पवित्रे स्तो वैष्णव्यो देवसविदप्रसमुपनात् तच्छित्रेण पवित्रेण पदो सूर्यस्य रश्मिभिरापो देवीर्ग्रीवो अग्रे गुमोऽग्रिमं यज्ञं यदाग्रे यज्ञापदिन्धत्त युष्मानिन्द्रो वृणीत वृत्रदूर्ये यूयमिन्द्रमवृणीर्थं वृत्रदूर्ये प्रोक्षितास्था
ఓం విష్ణుమావాహయామి మహావిష్ణుమావాహయామి సదా విష్ణుమావాహయామి యామి నారాయణమావాహయామి బ్రహ్మణ ప్రణేష్యామి గిరమానవాజం యచ్చా ప్రణయజ్ఞం దేవతావర్ధయత్పన్నాగస్య పృష్టే గిటమానో సప్తఋషీనాగం సుకృతాం యత్ర లోకస్తత్రేమం యజ్ఞం గిటమానం చ ధేహి ఓం ప్రణయా సోమాం ప్రణేష్యామి గిరమానవాజం యచ్చా ప్రణయజ్ఞం దేవతావర్ధయత్పన్నాగస్య పృష్టే గిటమానో సప్తఋషీనాగం సుకృతాం యత్ర లోకస్తత్రేమం యజ్ఞం గిటమానం చ ధేహి ఓం ప్రణయా కోప ప్రణయతమ ప్రణయత్వా బోధేమి ప్రణయాని యజ్ఞకం సకం సాధకంద్రః ఇదం వదంతి ఏం కృతపట్టావదాగ సహస్రభూషం యజమానేన్నించతి కోవో జనక్తి సమో జనక్తి సంవిశంతాందే వీరవిష పాత్రాన్ని దేవయిత్యాజీ ప్రజాపతిమావాహయామి ఇంద్రమావాహయామి అగ్నిమావాహయామి సుమమావాహయామి అగ్నిమావాహయామి సుమమావాహయామి అగ్నిశోమావాహయామి ప్రజాపతిమావాహయామి బ్రహ్మాణమావాహయామి ఇంద్రమావాహయామి వసునావాహయామి మృతావాహయామి రుద్రానవాహయామి అపాపోపస్పృశ్య శ్రీమహావిష్ణుమావాహయామి బృహత్పతిమావాహయామి మిత్రమావాహయామి వృణమావాహయామి ఆదిత్యానవాహయామి శ్రవవాహయామి పూషణమావాహయామి కక్షమావాహయామి కక్షదేవత सोममावाहयामि वैवाहिकयज्ञमावाहयामि यज्ञदेवत विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापते विष्णुनोभामि ब्रह्मणे विष्णुनोभामि इन्द्राग्नि विष्णुनोभामि अग्नये विष्णुनोभामि सोमाग्नि विष्णुनोभामि अग्नये विष्णुनोभामि सोमाग्नि विष्णुनोभामि अग्निशोभाभ्यां जुष्टं निर्वभामि प्रजापते विष्णुनोभामि ब्रह्मणे विष्णुनोभामि इन्द्राग्नि विष्णुनोभामि वसुभ्यो विष्णुनोभामि मरुद्भ्यो विष्णुनोभामि रुद्रेभ्यो विष्णुं निर्वभामि अपापोपस्पृश्य श्रीमहाविष्णवे विष्णुं निर्वभामि बृहत्पते विष्णुनोभामि मित्राग्नि विष्णुनोभामि वरुणाग्नि विष्णुनोभामि आदित्येभ्यो विष्णुनोभामि अस्भ्यां विष्णुनोभामि पुष्णे विष्णुनोभामि कक्षाग्नि विष्णुनोभामि कक्षदेव सोमाकृष्णुभामि वैवाहिकयज्ञाकृष्णुभामि यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्यो जुष्टं निर्वभामि सर्वदेवेभ्यो जुष्टं निर्वभामि आद्यन्तर्प्रतिश्रियामि चरन्तर्प्रतिश्रियामि अग्नेत्युतरसे समिदसि स्वाहा अमृतमजवारणमसे अन्तरितमरक्षोऽन्तरिता आराधयः प्रतिष्ठा आराधयः तत्तदिस्तापना तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा वाक्पतिस्तापना तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्वादवदापना तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा करसम्पूर्णावासमिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतं स्पर्शयित्वाभ्यर्च्या अक्षता आच्या चरुभिः इमामे अग्नैष्टगाधे नमः सन्त्वेका च शतं च सहस्रं च यदं च नियतं च प्रयतं च अर्पदं च न्यर्पदं च समत्रस्य मध्यं च अन्तस्य परार्थस्य इमामे अग्नैष्टगाधे नमः सन्तु इन्द्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः नृतये नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सुहोदसे नमः जराप्रभवे नमः विसर्पणे नमः वैश्वानराय नमः जातवेदसे नमः अपरिदादितेन मन्यस्व अनवदेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवतवेदप्रसुभा षष्टिशतसहस्र ान्यमक्षयमर्पदमानयायन्त यद्म आत्मा जातवेदस्ते नेत्यस्वमर्तस्वदेतमर्तगिरात्मान् प्रतिगा पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादिशानान्तं इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्यागु स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपापोपस्पृश्य श्रीमहाविष्णवे स्वाहा बृहत्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा सिभ्यागु स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवतसोमाय स्वाहा वैवाहिकयज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिकार्या ओं भू स्वाहा ओं भव स्वाहा ओं सव स्वाहा ओं भूर्भव स्व स्वाहा अदितेन्वमग्गुस्थाः अनुमदेन्वमग्गुस्थाः सरस्वतेन्वमग्गुस्थाः देवसविदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाख्यकर्मणि उपासनाग्नो आधारान्ते स्वरमन्त्राक्षरक्रियादोषप्रायश्चित्तार्थमतो देवादिशट्वैष्णवहोमं होष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमदेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रसुमा ओं अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रिधानदेवदं समो नमस्य वागं सुरे स्वाहा त्रीनिपदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि पश्यतिगिरो वृदानि पश्वसे इन्द्रस्वगित्यस्सखा स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवे विचक्षुरादर्ग स्वाहा तद्विप्रासोपमन्यमो जाग्रवागं सस्समिन्धरे विष्णोर्यत्रमं पदक स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भव स्वाहा ओं सव स्वाहा ओं भूर्भव स्व स्वाहा अदितेन्वमग्गुस्थाः अनुमदेन्वमग्गुस्थाः सरस्वतेन्वमग्गुस्थाः देवसविदप्रासामीः
कामाक्षी ఓం విద్యుత్కోటి దివాకరామనిషం శంకం గదా పంకజం చక్రం బిభ్రతి ఇందిరా వసుమతి సంశోభి పార్శ్వద్వయం కేయూరాంగతహారకుండలధరం పీతాంబరం కౌస్తుభం దీప్తం విశ్వధరం విభుం సుమక్ష విలసత్ శ్రీవత్సజిహ్నం భజే స్వచక్రశంఖం కటివరదహస్తం స్వర్ణాంబరం రత్నకిరీటకుండలం ప్రలంబసూత్రోత్పలమాల్యభూషణం నమామ్యహం వెంకటశైలనాయకం ఓం అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యాపరిమితశక్త్యా భ్రయబాణస్య మహాజలౌహస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానామనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకదమే పృథివ్యప్తేజో వాయువ్యాకాశ అహంకార మహదవ్యక్తాఖ్య సప్తావరణైరావృతే అస్మిన్ మహది బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిక్కజో పరిప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల ధనాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోకే భవర్లోక సవర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అథో భాగే మహానాలాయమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణా మణిమండలమండితే ఐరావతమండలీకవామన కుముదాంజన పుష్పదండ సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్య అష్టదిగ్దండి శుండాదండోత్తంభితే అమరావతే తేజోపదే సంయమనే రక్షోపదే సింధుపదే గంధవత్యలకాపదే కిశోపదే త్యష్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నేయమ నిరటితి వర్ణవాయుకుమేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకమాలక పరిపాలితే లోకాలోకాచలవలయితే లవణేక్షుసురాసర్పితరిక్షీరసుప్తోదగాఖ్య సప్తార్ణపరివృతే జంభోప్లక్ష కుచక్రౌంజశాకశాల్మలి పుష్పరాఖ్య సప్తద్వే పద్మీపితే మాహేంద్రమలయ సఖ్య అదృక్షద్వింధ్య భారయాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారతికిం పురుషహారీలా భద్రాశ్వకేతకమాలక హిరణ్యకరమణక కురువర్షాఖ్య నవవర్షాణాం మధ్యే భరతవర్షే మమ అనేక జన్మసూ ఇహ జన్మ నిచాయేతత్ క్షణపర్యంతం బాల్యయౌవనకౌమారవార్ధికేషు ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశ పూర్వేషాం దశాపరేషాం మత్వంస్యానాం మాతృవంస్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీపాకలోహిత ధామాదప సంఘాతకాలసూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః బుద్ధీర్యా తలే సూర్యమండలపర్యంతం కృతనాశేన వర్షసహస్రావశానే ఏకైకతనా మకర్షణక్రమేణ సర్వనాస్య మకర్షణ సంహితకాలే శ్రీహరిలోకే నివాససిత్యర్థం త్రిగణీకృత అగ్నిష్టోమ అద్రాత్రాప్తోర్యామశాంతమనవాజమేయ పౌండరీకాశ్వమేధాధి శతకృతపుణ్యఫలావాప్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సామీప్య సారోప్య సాయత్స్య పదమితి చతుర్విధ మోక్షఫలసిత్యర్థం అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య పరం వ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చావతార స్వరూపస్య శ్రీ భూనీలాసమేత శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః శ్రీ విఖణో మునీంద్రమదానుసారవిర్భృత్వాదిభిర్మన్వాదిభిర్ వశిష్టాదిభిః దివ్య మహర్షిభిః రిక్త గుహ్య ధర్మ పురాణ ఇతిహాస కల్పోక్త సకల ఫలావాప్యర్థం కన్యాదానం కరిష్యే. ఓం అస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య శంఖచక్రశార్ంగ కౌమోదయీ నందకస్య శ్రీమతో వైకుంఠ నాయకస్య శ్రీమత్ వైఖానస భగవత శాస్త్ర ప్రకారేణ ఆంగీన సవారహస్పత్య భారద్వాజత్రయారుషేయ ప్రమరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చావతార రూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణో నప్త్రే ఆంగీన సవారహస్పత్య భారద్వాజత్రయారుషేయ ప్రమరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణ భూషస్య మూల ప్రకృతే స్వకీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయ కర్మణో క్షయాతి వశాత్ ఉత్పత్తి స్థిత యకారణ భూషస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరమాసుదేవ శర్మణః పౌత్రాయ ఆంగీన సవారహస్పత్య భారద్వాజత్రయారుషేయ ప్రమరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య సమస్త దేవతా నికుటమకుటమణిగణ విజృంభిత పాదారవిందస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆదినారాయణ శర్మణః పుత్రాయ ఆంగీన సవారహస్పత్య భారద్వాజత్రయారుషేయ ప్రమరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవాయ భక్తలోక పరిపాలనాయ కిరీటహారకేయూర దివ్యాభరణ భూషితాయ దివ్య పీతాంబరధరాయ దివ్యమాల్యోభిశోభితాయ నిజావతారాయ స్వర్ణగరుడ వాహనారూఢాయ అచింత్య దివ్యాద్భుత నిత్య యౌవన స్వభావ లావణ్య తేజోరుద్రాకరాయ అఖిల శాఖాధ్యాయినో శ్రవణ నక్షత్రే మకరరాసౌ జాతాయ శ్రీ శ్రీనివాస పరబ్రహ్మణే వరాయ
ऋग्यजुस्सामाधर्मणसकलवेदाध्यायिनीं भार्गवस्यमन आप्रमाण और्ववेन्द्रपञ्जारुहेय प्रवरान्विता भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारपतीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेमितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीम् अयोनिजां भृगोत्सङ्कल्पतनयां उत्तरफल्गुणी नक्षत्रे कन्यारासौ जातायां श्रीदेवी नाम्नीं इमां कन्यां दास्यामि ऋग्यजुस्सामाधर्मणसकलवेदाध्यायिनीं काश्यप आवत्सारणि ध्रुवत्रयारुहेय प्रवरान्विता काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारपतीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेमितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीं अत्यन्तसौन्दर्यवतीं बहुश्यामलाङ्गीं कश्यप प्रजापतेः सङ्कल्पतनयां रेवती नक्षत्रे मीनरासौ जातायां श्री भूदेवी नाम्नीं इमां कन्यां दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकजिगीर्षया कन्यां सालङ्कृतां साध्वीं सुशीलाय सुमेधचेत् प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भरा सर्वभूता साक्षिण्यः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तस्य मुहूर्तोऽस्तु ஏடுகொண்டலுபாடா வெங்கடரமணா கோவிந்தா கோவிந்தா. திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமம், மதுபர்க்க பூஜை, திரை பிடித்தல், வஸ்திர சமர்ப்பணம் மற்றும் மகா சங்கல்பம், கன்னியாதானம் ஆகிய கைங்கரியங்களை செவித்தோம். அடுத்ததாக நாம் காண இருப்பது மாங்கல்ய பூஜை. அந்த திருவேங்கடமுடையானுடைய இரு நாச்சிமார்களுக்கும் கழுத்திலே பூட்ட வேண்டிய அந்த மங்கலிய நாணினை அர்ச்சக சுவாமி முறையாக வேத மந்திரங்கள் கூறி பூஜை செய்து அதனை பக்தர்கள் அனைவரிடமும் காட்டி ஆசிகளை பெற்ற பின்பு தாயார்களுக்கு அணிவிக்கப்படுகிறது. இதோ மாங்கல்ய பூஜையை சேவிக்கலாம். திருமகளானவள் ஒவ்வொரு ஊரிலும் ஒவ்வொரு பெயருடன் விளங்குகிறாள். திருமலை வாசனின் அலர்மேல் மங்கை பத்மாவதி தாயாராகவும், ஸ்ரீரங்கத்திலே ரங்கநாயகியாகவும், காஞ்சிபுரத்திலே பெருந்தேவி தாயாராகவும், சோழிங்கபுரத்திலே அமிர்தவல்லி தாயாராகவும், திருவல்லிக்கேணியிலே ருக்மிணி பிராட்டியாகவும் பெயர் பெற்று விளங்கிய அந்த ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கு இப்பொழுது மாங்கல்யத்தை, அதாவது பூஜை முடிந்த பின்பு மாங்கல்யங்களை அணிவிக்க இருக்கிறார். ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டிமார்கள் எப்பொழுதும் கூட பகவானை விட்டு இணை பிரியாமல் இருப்பவர்கள். அப்படிப்பட்ட அந்த நாச்சிமார்களுடைய அந்த மாங்கல்யங்களுக்கு முறையே அர்ச்சக சுவாமி சுத்த ஜலத்தினால் அதை சுத்தப்படுத்தி அதன் பிறகு மஞ்சள் குங்குமம் இட்டு அது அக்ஷதை, திருத்துழாய் போன்றவைகளால் பூஜை செய்வார். உயர்வர உயர்நலம் உடையவன், இவனை விட உயர்ந்தவர், ஏற்றம் உடையவர் வேறொருவரும் இல்லை என்று கூறும் அளவுக்கு உயர்ந்த ஆனந்த திருக்கல்யாண குணங்களை உடையவன் ஸ்ரீமன் நாராயணன் ஒருவனே. எம்பெருமானின் திருப்பாதங்களை பணிந்தால் ராமனாக, கிருஷ்ணனாக, நரசிம்மனாக திருமகளோடு கூடி இந்த கலியுகத்திலே நின்றும் இருந்தும் கிடந்தும் நமக்கு எழுந்தருளி அருளி செய்கிறார் பகவான். வியூகமாகிய திருப்பார் கடலிலும் அர்ச்சாவதாரமாகிய திருவரங்கத்திலும் சயனித்திருந்த எம்பெருமான் திரு வேங்கடத்தில் நின்ற கோலத்திலே உள்ள வேங்கடவனை ஆழ்வார் நின்ற வேங்கடம் நீள் நிலத்துள்ளது என்று பாடினார். சம்சார கடலிலும் திருப்பார் கடலிலும் செல்ல முடியாத பக்தர்கள் சயன கோலத்திலே உள்ள அரங்கனை ஆசிரிதர்கள் திருமலையில் நின்ற கோலத்தில் காட்சியளித்த திருமாலை வணங்கவே அவர் அவதரித்தார். அப்படி அவதரித்த பெருமாளுக்கு இதோ இப்பொழுது அந்த மாங்கல்யங்களுக்கு பூஜை நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. மாங்கல்ய பூஜையை சேவிக்கலாம். பூவுலகத்தை ரட்சிக்கும் எம்பெருமானான மலையப்ப சுவாமி மாப்பிள்ளை கோலத்திலேயும் ஸ்ரீதேவி பூதேவி தான் நாச்சியார்கள் மணமகள் கோலத்திலேயும் வெட்கத்துடன் நின்று கொண்டு ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அப்படி அந்த நாச்சிமார்களுடைய கழுத்திலே அணிவிக்க வேண்டிய மாங்கல்யங்களுக்கு அர்ச்சக சுவாமி முறையே பூஜை செய்து கொண்டிருக்கிறார். இன்று இந்த விசேஷமான தைப்பொங்கல் மகர சங்கராந்தியின் நன்னாளிலே திங்கள் கிழமையுடன் கூடிய சதபிஷம் சதயம் நட்சத்திரத்திலே
எம்பெருமானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை நேரடி ஒளிபரப்பில் சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயகத்தின் அந்த திருக்கல்யாண மகோத்சவமானது மிகவும் விசேஷமாக மலையப்ப சுவாமிக்கு தினந்தோறும் வைகான சாகம விதிமுறைப்படி நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. பெருமாள் நம்மை அநேக கஷ்டங்களிலிருந்து காப்பவன் வைஷ்ணவம் சரணாகதிக்கு பெரிய பீடமாக விளங்குகிறது. அப்படி பிரகல்லாதன் திரிகரண சுத்தியாக சுவாமியை நம்பியவன் ஹிரண்ய கசிப்பனை வதை செய்த பின்பு பெருமாள் நரசிம்மர் மிகவும் கோபமாக உக்ர ரூபத்துடன் இருந்த பொழுது லக்ஷ்மி தாயார் கூட அருகிலேயே செல்வதற்கு மிகவும் அஞ்சினாளாம். அப்படிப்பட்ட நேரத்திலே பிரகல்லாதன் சுவாமியின் அருகிலே சென்று சாஷ்டாங்கமய நமஸ்கரித்து அவர் மீது கோபம் தணிய பெருமாளை துதித்து கோபத்தை அடக்கச் செய்தான் பிரகல்லாதன். பெருமாளை நாம் சரணாகதி செய்தால் நிச்சயம் நமக்கு தயையுடன் அனுகிரகம் செய்வார். மனதிற்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கக்கூடியவர் வல்லவன். இராமாயணத்திலே 7 மலைகளையும் அதிலே வேங்கடத்தை யுத்த காண்டத்திற்கு உதாரணமாக கூறுகிறார்கள். யுத்த காண்டத்திலே பாவங்கள் செய்தவர்கள் உயிரிழந்து புண்ணியம் செய்தவர்கள் மீந்தனர். வேம் என்றால் பாவம், கடை என்றால் போக்குபவன். அப்படி என்றால் பாவங்களை போக்கவல்ல கடவுளானவன். வேங்கடாச்சலத்தை ஸ்மரித்தால் பாவங்கள் அனைத்தும் போகும். ஒருமுறை ஒரு பக்தன் ரமண மகரிஷியிடம் சென்று, சுவாமி, இந்த சம்சார பொறுப்புகளை ஏற்றுக்கொண்டு பெருமாளை மனதார நினைக்க கூட முடியாமல் இருக்கிறதே, தவித்து கொண்டுள்ளனே என்றானாம். அதற்கு ரமண மகரிஷி சிரித்துக்கொண்டு, உன்னுடைய உடைமைகளை நீயா சுமந்து கொண்டு செல்லுகிறாய்? நீ செல்லும் ரயில் தானே சுமந்து கொண்டு செல்லுகிறது. ஆகவே பகவானிடம் பாரத்தை விட அவன் பார்த்து கொள்வான் என்றாராம். இதோ மாங்கல்ய பூஜை முடிந்து மாங்கல்ய தாரணத்தை சேவிக்க இருக்கிறோம். முதலில் ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கு மாங்கல்ய தாரணம். லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா. அடுத்து பூமி பிராட்டிக்கு மாங்கல்ய தாரணம். தராரமண மாங்கல்ய தாரண முகூர்த்த சுமுகூர்த்த அஸ்து. பிரஜாபதி சோமகும் ராஜா நமசுஜத சந்திரயோ வேத அன்வஸ்ருத்யந்த தானஹஸ்தே குருதா அத சீதா சாவித்ரி. भूदेव्यै नमः. मांगल्यधारण मुहूर्त सुमुहूर्त अस्तु. ಕಮಲವಾಸಿ ನೀವು ಕಮಲ
देवसविद प्रसुवा ओम अग्निरेत प्रथमो देवता नागम सोऽस्य प्रजामन्त्य प्रत्यपाशात् तदयगं राजावरणो नमन्य रामयथेजकस्त्री मौत्रमगन्नरोधात् स्वाहा इमं मे वर्णस्वदेहमद्यादिवर्णया तामवस्यराजके स्वाहा तत्त्वायामि ब्रह्मणा मन्दमानसराजा श्रीगितमानो हविर्भिः गहेदमानो वर्णेह बौद्धजगं समान आय प्रमोषे स्वाहा त्वन्नो अग्नेवर्णस्य विद्वान् देवस्य हेनो वजासतिष्ठाः यजिष्ठो बन्धिनमस्सोषडानो विश्वान् द्वेषागं सिप्रमध्यस्मत् स्वाहा सत्तन्नो अग्ने मम भवति नेतिष्ठो अस्यावशतो व्यष्टौ अवयक्ष्मणावरणकमरानो वेहमृतीकमुदहवो न येधि स्वाहा तमग्ने अजास्य यासन्मनसाहितः अजासन हव्यमोहिते जानो देमहेषटक स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भव स्वाहा ॐ सव स्वाहा ॐ भूर्भव स्व स्वाहा अदितेन्ममग्रस्थाः अनुमदेन्ममग्रस्थाः सरस्वतीन्ममग्रस्थाः देवसविदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाख्यकर्मणि औपासनाग्नौ लाजहोमं होष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसमेत प्रसुवा इमान् लाजानामित्यभिकार्या ओम इमान् लाजानापपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् ययन्नार्युबभ्रूते क्नौ लाजानापपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषास्त्वायुषो दोषधीनाकुं रसेनोत्पत्यन्यस्य सुष्मेनोधस्ताममृताकुम् अणु विश्वामुतत्मजामयन् धारापुदन्या इव अतिगाहे महित्विषः ॐ इमान् लाजानामपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् ययन्नार्युबभ्रूते क्नौ लाजानापपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषास्त्वायुषो दोषधीनाकुं रसेनोत्पत्यन्यस्य सुष्मेनोधस्ताममृताकुम् अनु विश्वामुतत्मजामयन् धारामुदन्या इव अतिगाहे महित्विषः ॐ भू स्वाहा ॐ भव स्वाहा ॐ तव स्वाहा ॐ भूर्भव स्व स्वाहा अदितेन्ममग्रस्थाः अनुमतेन्ममग्रस्थाः सरस्वतेन्ममग्रस्थाः देवसविदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाख्यं कर्मणि औपासनाग्नौ सर्वप्रायश्चित्तार्थमतो देवादिषट्मैष्टमहोमं होष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रसुवा ॐ अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रिधानदधेवदं समूढमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदां विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णुकर्माणि वशतगिरो प्रधानि स्पृशे इन्द्रस्य गित्यस्सखा स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवेव चक्षुरादरग् स्वाहा तद्विप्राजोपि पुण्यमो जाग्रवागं सस्समिन्धरे विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भव स्वाहा ॐ सव स्वाहा ॐ भूर्भव स्व स्वाहा अदितेन्ममग्रस्थाः अनुमतेन्ममग्रस्थाः सरस्वतेन्ममग्रस्थाः देवसविदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीयप्पदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाख्यञ्जकर्मणि औपासनाग्नौ कर्मसात्पुण्यार्थम् उपरिष्टादन्तहोमं होष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रसुवा ॐ यतस्य कर्मणोत्यतीर्जं यद्वान्यो महाकरम् अग्निश्च स्विष्टकृतिद्वान् सर्वकृष्टकं धुलङ्गरोतु स्वाहा अग्नये स्विष्टकृते धुतहुदाहुतीनां कामानागं समर्थयित्रे स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नये नादाय स्वाहा अग्नये नपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यः स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टं देवतमपुष्मै स्वाहा अग्नये सृष्टिकृते स्वाहा वास्तवते नमो वास्तवतये स्वाहा जन्म आत्मनो मिन्दाभूतग्निस्तत्तमधार्जातमेधा विजर्हणि स्वाहा पटनग्निचक्षुर्धातुरिन्द्रो बृहत्पतिः पुनर्मे अश्विनायं चक्षुरादत्तमक्षो स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा वषडनिष्टेभ्यः स्वाहा भेषदन्द्रिष्टे स्वाहा स्कृत्यै स्वाहा दवराज्यै स्वाहा देवी
तनूभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा वृद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा येधोऽस्येधीमहि स्वाहा समितस्य तेजोमयधेः स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मेवाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मेवाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तमेवाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मेवाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिमेवाहि स्वाहा सप्तते अग्नि समित सप्तदिक्वा सप्तऋषयः सप्तधाम प्रजानि सप्तहोत्रा सप्तधात्मा यदन्ति सप्तयोनिरापरस्वा कृतेन स्वाहा प्रतधान विद्वान् अनुष्टुभृतेन पूर्णमाहुतिञ्जो मिमनधा प्रजापतये स्वाहा अग्निर्भक्तं वेद भक्तं ज्योर्भक्तं पृथिवी भक्तं वोषाधे वनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव भक्तं अग्निर्जेर्णं वेद जेर्णं ज्योर्जेर्णं पृथिवी जेर्णं वोषाधे वनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव जीर्णं समन्दाम्बरेर्हविषा घृतेन समादित्येन वसभिः मरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरङ्क्तां दिव्यं नभो गच्छतु यत्स्वाहा आद्यशेषम् इन्द्राय जहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यदो वेदस्तृप्यदो द्योस्तृप्यदो पृथिवीस्तृप्यदो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्तां वोषादेवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव तृप्यन्तां मे दक्षिणपितर्पिता महाप्रपिता महास्याक्षय्यमस्तृप्यन्तां मदितेन्वमकुस्ताः अनुमदेन्वमकुस्ताः सरस्वतेन्वमकुस्ताः देवतमिदप्रासामीः आवाहनदेवताभ्यो नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा सदसि सन्मे भूयात् स्वाहा मे भूयात् स्वाहा क्षणमक्षतेजुहोमि अक्षितमसि मामे श्रेष्ठाः वरिष्ठाः कक्वरेष्ठो क्रमजो अपावधीन् तेषं वचो अपावधीक स्वाहा ऊर्ध्वं यज्ञं लिखितमानि एकवर्तपत्रमेधामश्वन् पृथिव्या दिवोपा विष्णवतपा पृथिव्या स्वाहा पश्चिमतः परिधिमपनया दक्षिणतः परिधिमपनया उत्तरतः परिधिमपनया पश्चिमतो विष्णोः सदनमसि दक्षिणतो विष्णोः सदनमसि उत्तरतो विष्णोः सदनमसि प्राच्यां विष्णोः सदनमसि सर्वानन्यान् प्रथमोक्त्या ग्रन्थीन् विसृज्यार्भिप्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामापवोषधयो मरुतां पुरुषदयस्तदिवं गच्छततो नो वृष्टिमेतय स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनं शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्मादेर्लभते नित्यं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारतयो भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयायुधं जमदग्ने कश्यपस्य त्रयायुधं यद्देवानां त्रयायुधं तन्मे अस्तु त्रयायुषाम् दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतं च वर्चसे त्रयायुषाम् आपोहिष्ठामयो भवस्तानमूर्ते तथा रामहेरणाय रक्षसे योमशिवतमोरसस्तस्य भाजयते हनः विशतिर्वमातरः तस्मारङ्गमामवो यस्य क्षया जजन्वथा आपो जनयथा जनः यत्तेऽग्ने तेजस्तेनाहं तेजस्मि भुजासं यत्तेऽग्ने वर्चस्तेनाहं वर्चस्मि भुजासं यत्तेऽग्ने हरस्तेनाहं हरस्मि भुजासं मयि मेधामयि प्रजामयि अग्निस्तेजो दधातु मयि मेधामयि प्रजामयि इन्द्रियं दधातु मयि मेधामयि प्रजामयि सूर्यो भ्राजो दधातु मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं मदासनाय कृतमया देव परिपूर्णं तपस्ते प्रायश्चित्तान्यशेषान् होमकर्मात्मकानि वैतानि शेषावशेषानां कृष्णान् स्मरणं ब्रह्मकायेन वाजामनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मा वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि सर्वं श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पात्रघ्याजमनीयं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यथा सुखं यथा स्थानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः पुनः पात्रघ्याजमनीयं समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि आज्योपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत्समारोपणं सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु यज्ञेश्वराय नमः यथा सुखं यथा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च
ఓం నమో వెంకటేశాయ. గోవింద గోவிந்த. லாஜஹோமம் பிரதான ஹோமம் அஞ்சனமிடுதலை சேவித்தோம். அடுத்ததாக வாரணமாயிரம் கைங்கரியத்தை சேவிக்க இருக்கிறோம். பூமி பிராட்டியின் அம்சமாய் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரிலே அவதரித்த ஆண்டாள் எம்பெருமானிடம் பக்தி பூண்டு எம்பெருமானையே மணந்து கொள்வேன் என்று சொன்னவர். சொன்னபடியே மனமும் புரிந்து கொண்டவர். ஆண்டாள் அருளிச் செய்த வாரணமாயிரம் பாசுரங்களை சொல்லிக்கொண்டே ஒருபுறம் அர்ச்சக சுவாமியும் மறுபுறம் அன்னமாச்சாரியார் என் வம்சத்தினரில் ஒருவரும் தேங்காய்களை உருட்டும் நிகழ்ச்சியை நாம் பார்த்து கொண்டுள்ளோம். இம்மைக்கும் ஏழேழு பிறவிக்கும் பற்றாவான் நம்மை உடையவன் நாராயணன் நம்பி செம்மையுடைய திருக்கையால் தாழ்பற்றி அம்மை மிதிக்க கனா கண்டேன் தோழி நான் என்று அந்த ஆண்டாளின் பாசுரம். எத்தனை பிறவி எடுத்தாலும் பற்றாக நமக்கு விளங்குபவன் எம்பெருமான் என்று அந்த பகவானுடைய பெருமைகளை நன்கறிந்தவர் நாம். அப்படி பகவானை சேவித்துக் கொண்டு அடுத்ததாக மாலா பரிவர்த்தனம். இந்த மாலா பரிவர்த்தனம் என்பது நல்ல விஷயத்தை நாம் விண்ணப்பிக்க தோன்றுகிறது. பகவானுக்கு புஷ்பங்களால் கொண்டு அர்ச்சனை செய்வது என்பது நமக்கு எதை தெரிவிக்கிறது என்றால், அஹிம்சை, இந்திரியம் நிகிரகம், சர்வபூத தயை, பொறுமை, ஞானம், தவம், தியானம், சத்தியம், இந்த 8 புஷ்பங்களாகும். இதோ எம்பெருமானைக்கு அணிவித்த மாலையானது ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கு மாற்றப்பட்டது. ஸ்ரீதேவி பிராட்டி அந்த மாலையை கொண்டு சென்று திரும்பவும் எம்பெருமானுக்கு அணிவிக்க அனுப்புகிறார். லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா, ஏடு கொண்டலவாடா வெங்கடரமணா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. அதைத் தொடர்ந்து அந்த வேங்கடவனுடைய திருக்கழுத்திலே இருந்த மாலையானது பூமி பிராட்டிக்கு சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது. பூமி பிராட்டி அந்த மாலை அணிந்து கொண்டு சூடி கொடுத்த களைந்த நாச்சியார், அதாவது அந்த ஆண்டாள் அனுப்பிய மாலையை எம்பெருமானுக்கு திரும்பவும் சூட்டுகிறார்கள். ஸ்ரீ வெங்கடேசா ஸ்ரீ சீனிவாசா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. அந்த மாலா சமர்ப்பணத்தை தொடர்ந்து ஸ்ரீதேவி பூதேவி நாச்சிமார்கள் இருவரையும் கூட எம்பெருமானுடைய பக்கத்தில் ஆசீனப்படுத்துகிறார்கள். அதைத் தொடர்ந்து அக்ஷதாரோபணம் என்னும் தலம்புராலு கைங்கரியம், அதைத் தொடர்ந்து மங்கள நீராஜனத்துடன் திருக்கல்யாண மகோத்சவம் நிறைவு பெறுகிறது. உலகெங்கு இருக்கும் பக்தர்கள் அனைவருக்கும் கூட எம்பெருமானுடைய கருணா கட்டாட்சம் கிடைக்க வேண்டி நாம் சேவித்துக்கொண்டு அக்ஷதாரோபண கைங்கரியத்தை சேவிக்கலாம். லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா, வசுந்தரா ரமண கோவிந்தா, ஏடு கொண்டலவாடா வெங்கடரமணா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று எம்பெருமானை சேவிப்போம். అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకనే గోవిందా గోవిందా. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పెండ్లి
పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद. प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ.